गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी को प्यार भरा नमस्ते। गुरु जी रब है, ईश्वर है। शुक्राना गुरु जी, आपने ये मौका दिया आपकी महिमा करने को। गुरुजी मैनी हैप्पी रिटर्न्स, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। पूरी दुनिया में गुरुजी का जन्मदिन बहुत जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, मनाया गया है। बड़े मंदिर ने तो इतना ब्यूटीफुल अरेंजमेंट किया, इतनी संगत आई। शुक्राना बड़े मंदिर के मैनेजमेंट का, शुक्राना गौरव भैया का। गौरव जी हैज टेकन सच ब्यूटीफुल केयर। जिस तरीके से उन्होंने इतना बढ़िया बर्थडे सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज की। जब भी गुरुजी की महिमा, गुरुजी के तो हर पल शुक्राना शुक्राना ही रहता है। बट वेन एवर वी कम ऑन द प्लेटफॉर्म टू स्पीक अबाउट हिम, one gets a little cold feet in spite of speaking so much and thanking him so much, and yet one still gets a little nervous. And Guruji, संगत सत्संग तो आप ही करवाते हैं। एंड गुरुजी कहते सी ना, जो सत्संग करता है, जो सत्संग सुनते हैं, सारे दा कल्याण हो जाता है। ये मौके के लिए शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा गुरुजी। गुरुजी कहते सी साडी जर्नी विद हिम जन्मों की होती है। सो आई कांट से दैट यस आई मेट हिम फिजिकली इन 2005. I cannot say it. I think it was March 4th or 5th. And yes, I was only just about 9 years when I had first gone to Amarnath. So I think my journey had started जन्मों से हो रखी थी। And physically he met me in 2005. I can't say I met him because गुरुजी के दर पे, गुरुजी के मंदिर में तो एक पत्ता भी नहीं फटकता इनकी इजाजत के बिना। एंड जब गुरुजी चोले में थे तब कहते थे कि लाइना लग जाएंगी। There will be lines and lines of people. There will be so much of संगत जो गुरुजी के दर पे आएगी, बड़े मंदिर में आएगी ब्लेसिंग्स के लिए। एंड कल हम सब ने देखा द रश दैट वाज देयर आफ्टर द पैंडेमिक, आफ्टर द कोविड। इतनी भीड़ थी जो it was literally beyond control. And आप सोचो जो इतनी मेहनत से लोग जब वहां आ रहे हैं ते उन्हां दे कोल ते कोई एक बार ते आएगा on the face of somebody, but अगर कोई बार बार आ रहे हैं और इतनी तादाद पे लोग आ रहे हैं तो आप सोचो कितनी शक्ति है। और गुरुजी कहते थे बड़े मंदिर में 11 ज्योतियों की शक्ति है, जो कोई पास से भी निकल जाए उसका भी कल्याण हो जाए। And yesterday we saw that. Shukrana Guruji for an amazing darshan that you have given us. गुरुजी के और इतने the arrangements that were made, I think must have been for lakhs of people. कल तो इतने लोग थे एंड शुक्र दैट सबको लंगर मिला। इतनी दूर दूर तक लंगर अरेंजमेंट्स करके रखी हुई थी गुरुजी ने। एंड जो अंदर जब इतनी भीड़ भी हो गई, लिटरली चौको ब्लॉक हो गया पूरा, फिर भी लोगों को बाहर से भी लंगर मिला, जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, सब कुछ मिला। इतने ब्यूटीफुली सब मिला। शुक्राना गुरुजी की हम सब का इतनी देख रेख करी आपने।
एंड सबको ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी के लंगर में तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ इनके लंगर प्रसाद में है, सब कुछ। एंड गुरुजी के से जब हम कनेक्शन बनाते हैं, इट इज नॉट कोई इंज नहीं हैगा कि तुसी किसी दे थ्रू जाना है या कुछ नहीं, तुसी अपनी कनेक्शन गुरुजी दे स्वरूप ਵਿੱਚ गुरुजी आपे ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। जद भी तुसी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ अपनी ऐ नहीं हैगा कि कोई आप प्यार से जब भी गुरु जी के पास बैठोगे, गुरु जी से बात करोगे, उनके स्वरूप से बात करोगे, तो वो गुरु जी से ही बात कर रहे हो आप। एंड जब when गुरु जी was in चोला, तब तक everything practical। हुन जिन्नी जिद्दी श्रद्धा और ना ले जाए। इट इज हर मतलब कोई किसी नु कदे भी ए ना सोचना कि कोई गुरुजी यूज्ड टू ब्लेस पहले, बिकॉज कल थोड़ा से जैसे मतलब गुरुजी यूज्ड टू ब्लेस द रिच एंड द पुअर अलाइक। मैं एक छोटा जा एक्सपीरियंस इस वास्ते शेयर करना चाहनी हाँ। कल इन्नी गाड़ियां भी सी, लोग पैदल भी आ रहे सी, सब इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। एंड पीछे फर्स्ट आई जस्ट शेयर अ स्मॉल, इट्स इम्पोर्टेंट टू शेयर दिस। मैनू पीछे डेंगू हो गया सी ते आई वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड इट वाज द आई थिंक second or third day and my blood counts had gone pretty bad and it was the second or the third night जब गुरुजी ने मैनू दर्शन दिता। एंड जब when गुरुजी gives when you dream of Guruji, it is not महापुरुषों को रब नु अगर तुसी तुहानू ड्रीम आए या ड्रीम आए किसी नु भी, ते it is not a dream, वो साक्षात दर्शन होंदा है। ते गुरुजी came and he showed a beautiful, बहुत सुंदर दृश्य दिखाया उन्होंने। बड़ा मंदिर दिखाया उन्होंने। बड़े मंदिर में ऊपर इतना बड़ा जो हमारा शिवलिंग है, गुरुजी ने वो दिखाया। एंड आई वाज इन अ प्रीटी बैड शेप एंड आई वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। एंड शिवलिंग के आसपास उन्होंने दिखाया पूरा घी प्रसाद है। एंड देन द शिवलिंग जस्ट ओपन्ड फ्रॉम द टॉप। एंड जिस तरह शिवजी जी के जटाओं से गंगा बहती है, वहीं से ऐसे ऊपर से शिवलिंग खुला एंड पूरा नदी बह रही थी। दिस वॉज ऑल इन द ड्रीम दैट ही शोड। एंड ही सेड रितु आंटी अमृत पी ले। एंड संगत जी तुसी सोचो ए ड्रीम विच मैनू गुरु जी ने माई हैंड्स वर जॉइंड टुगेदर, जिस तरह जी असी नदी तो या नलके तो इंज हाथ जोड़ के जल पींदे हैं, ते मैं हाथ जोड़ के ए सारा कुछ ड्रीम विच हैगा, हाथ जोड़ के मैं इंज अमृत पी रही हाँ। एंड इन दैट ड्रीम जब मैं अमृत पी रही सी ते गुरु जी कहंदे रितु आंटी आई ब्लेस। एंड इन्नी संगत सी ओ अमृत पी रहे सी। एंड गुरु जी कहंदे आई ब्लेस द रिच एंड द पुअर अलाइक। ही टोल्ड मी दिस इन द ड्रीम। ते he never sees ki somebody is moneyed or somebody is not moneyed. No, he blesses the rich and the poor alike. And he said this exactly in these words to me. He told me that. And he said that when I was drinking the amrit, he said, thoda pe pani kha raha hai, nahi to pet kharab ho jayega. And he gave me that amrit to drink, Sangat ji. And then he told me, as soon as amrit pee karke all the blessings गुरु जी के जल प्रसाद में, लंगर प्रसाद में, लाइक आई सेड, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स, सब कुछ रखा है। नेक्स्ट डे व्हेन द डॉक्टर्स केम फॉर द मॉर्निंग राउंड, आई थिंक इट वाज 9:30, they were a little taken aback and they just said that they told me that my son was also there and they said
you can go back home now, it's all right, there's nothing to worry. So गुरुजी ने, आप सोचो संगत जी, अभी कोविड के टाइम में भी कितनी संगत को गुरुजी ने हम लोगों को फूलों की तरह रखा, कितना ब्लेस किया, कितना सबके साथ कनेक्शन बनाया, हर संगत के साथ in our respective houses, because मंदिर was closed. ये तो अब इतने दो साल के से ऊपर हो गया कि इतनी ब्यूटीफुली कल गौरव जी ने बर्थडे ऑर्गेनाइज कराया गुरुजी का, एंड लिटरली सारा दिल्ली वहीं पर आ रखा था, एंड इतना सोना लग गया कल। तो गुरुजी मतलब इतना ध्यान रखते हैं अपनी संगत का। मैं तो आपको भी बता रही हूँ, लाइक हाउ व्हाट हैपेंड विद मी, एंड इवन ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, सो मेनी पीपल, सबके संगत, हम तो शुक्राना गुरुजी दैट यू हैव ब्लेस्ड अस ऑल, एंड इन्ना सारे ध्यान रखा। इट इज अ मार्वल। जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी ਨੂੰ मिली सी, when my friend had taken me to Empire Estate, and there Guruji was sitting alti-palti on the sideboard, and and my friend, she took me there in the evening time. So that is and जब बाहर हम गाड़ी से उतरे तो लॉट ऑफ खुशबू, इतनी खुशबू सी, गुलाबो दी, मतलब इतनी गुलाब. So I was just thinking, being an army officer's daughter, army officer's wife, and an army officer's daughter-in-law, then we know, when the VIPs come, wo sara, we spread the canteen ka fragrance, roses and all that. So I was just thinking कि इन लोग ने तो इतना गुलाब पूरा बाहर तक छिड़का हुआ है. And my friend, she took me in, and she said, she just, with her hand like that, she waved her hand and she said, meet my Guruji. So I just saw, सारी ता idea हैगा कि गुरुआं ਨੂੰ ਅਸੀਂ white ਚੋਲੇ ਚ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, and we never see, I had never seen a guru of this nature, and he was wearing drain pipes, and he had a floral shirt, half sleeve shirt, bush shirt he was wearing, and I just thought in my mind that he's so young, and I was just wondering, and Shammi Asiyo, I knew that I couldn't get over the fact, but Sangat ji, just when she said this, Guruji looked up. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਰ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ. I was so completely and totally taken aback, and I felt as if जिस तरह मेरा MRI भी हो गया, X-ray भी हो गया, that there is nothing that is being hidden by him. His after all, he is Mahadev. He has that the third eye, and he knew everything. And जिस तरह as my journey moved on, I realized कि मैं ते रब दी दरगाह च ते बहुत लेट, उस वेले ते एहसास ही नहीं होया सी मैनू, किसी ਨੂੰ भी नहीं हो सकता, because we had never seen Lord God in this, we had never seen or thought that God can be like this. And he is, but you see, Sangat ji, he is Rasak Vairagi Guru. His style was so different. He came as a human being to be with us, whom he has created, whom he has held hands with and taken us through the journey. And Sangat ji, and then he just, when he, after oh jeri uncomfortable, मैंने तो goose pimples हो गई कि जिस तरह कि he knows every dirty secret of mine. मैंने तो इंज लग गया जब उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो उन्होंने इंज करके ना हाथ करके he just gave इशारा कि that I can go enter in. So we just went in and sat on the side, and ਬਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ. ਉਧਰੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹ was given. So I thought ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ, and it was about 7:45 ਵਜ ਰਹੇ ਸੀ.
So I refused. And then my friend Olga, she said, this is prasad. Prasad, I understood immediately, so I pee leti. And thale Fauji style, mein little bit I left in the glass. Then she said, finish it. There, I finished it. Of course, much later I heard, when I heard, satsangs I heard, and I heard also, how Sharad Pawar unhone cha prasad puri nahi piti si. How, it is so important to have his prasad completely and totally, ek grai खा लेनी चाहिए ते पी ले ओ ते पी लेनी चाहिए ओदे विच ते सब कुछ रखा है. That I learned as my journey moved along. So after that, Sangat ji, Guruji came there wearing beautiful robes. He was wearing such beautiful robes. I had never seen a man dressed, excepting when I was about 6 years of age. I had seen Gogia Pasha had come to my father's regiment, and Jad wearing, beautiful robes. So when I saw Guruji dressed up in those beautiful robes, तो मैं अपने मन में सिर्फ संगत जी सोचा that he is a world class magician. ऐसे पूरी दुनिया को ही हिला देंगे. ऐवी मेरे मन में सोच आया, because I had seen only one other man wearing such kind of robes, beautiful robes. And he wore those robes because he wanted us also to be beautiful and to enjoy life, because that's what life is meant for. ते उन्होंने जब मैं देखा ते फिर ओम नमः शिवाय वजन लग गया. Now with ओम नमः शिवाय तो मैं immediate connection हो गया, because I was just about 8-9 years of age जब मैं first time अमरनाथ गई थी. And I had gone walking to Amarnath, and I had become, I started fasting, doing Shivji ji ke vrat from the age of 13. The Om Namah Shivaya de naal te I connected immediately, Sangat ji. And ude baad Maharaj aake apni kursi pe baithe. And then jab khatam hua, my friend, she introduced me to Olga. She introduced me to Guruji, and she said, Guruji, ai meri saheli hegi. And Guruji looked at me and said, na ki hai? मैं क्या रितु. कहते रितु कौन? मैं क्या रितु. कहते छेती बोल. मैं क्या रितु सेठ, daughter of Colonel Roshanlal, wife of Colonel Ashok Seth. And कहते बच्चे. मैं क्या एक लड़का है. किथे है? मैं क्या दुबई. कहते मुंडे दा ब्याह कर ते ऐश कर. This he told me there. And then he just waved his hand and pointed out, sent me, udaro red cape paake Raghurai ji was sitting there. And he sent me to have langar prasad there. Te kade is tarah beh ke te langar prasad kita hi nahi si. So I was a little taken aback, flummoxed ki assi kha kis tarah rahe ne, idhar thalle beh ke char log ek thali ch kha rahe ne. Sangat ji, that was his way of telling us, I think he used to, that was his amazing divine way of blessing us and giving us everything that we desired. Te udhar beh ke unhone Raghurai ji ne, he gave roti prasad, laddu prasad, and matlab rab di, tusi socho rab de kol beh ke rab sanu langar khwa rahe si. Nothing could be more celestial and more divine than that. But little did we realize that, a lot of us never realized कि ऐसी रब दे चरनाई च बैठे ने. And after that, Langar Prasad ke baad, I just told my friend, I said, let's go. Because my husband was flying in Srinagar, and he had called when we were leaving and said that, he also never, matlab assi Guruan de est vele te jai nahi dani hai. Swere we are used to going to Gurus early in the morning. So when he had called at about 6:45, he asked me, what's happening? I said, I'm going with Olga to her Guruji. So he said, koi time hai Guruan de jaan da, come back home fast. So that tension had already started. And I told my friend, let's go back home. She says, when you go to the chief's house, don't you go and thank him? That became another thing. So we went out, washed our hands, came back, and stood in line to
thank Guruji. Now everybody was doing Dandvat Pranam to Guruji, and when the person in front of me did the same, and I just thought in my mind, Sangaji, and Guruji के चरण इतने सुंदर चरण, उनके चरण ऐसे उनके चोले से बाहर थे और संगत उनके चरणों को प्रणाम करके छू करके शुक्राना करके जा रही थी. Now that was my first meeting with him, and I never I was so taken aback कि किथे गई हैं. And then when it was my turn, I just thought, I said, he's so young, I'm not going to touch his feet. Sangaji, we are such fools, we never realize where we are. And मतलब it is because कि मैं रब दे सामने खलोती हूँ. Rab knows everything. Guruji knew as soon as when he has scanned, because actually it was a scan. When he looked at me, it was as if everything he has seen. So and Sangaji, he just put his feet back under his robe. I was relieved also. I just standing, I bowed my head, joined my hands and said, thank you so much, and left from there. So Sangaji, after my friend, she dropped me back. Then that night, Guruji came in my dream and asked me, he said, Ritu Aunty, आपके बेटे का नाम अखिल रात सेठ है? I told him, I said, जी हाँ. And this is a conversation, Sangaji, that is happening after my first meeting with him. And he then gave a very special blessing for my son. And that is very personal, ते वो मैं share नहीं करांगी. And then that was all in the dream, Sangaji. ते तुसी सोचो, मतलब ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਹੈ. And it was completely and totally, and when I had been sitting over there, I had just thought in my mind that because my son had been wanting something, so I just thought that कि मेरे बेटे का ये काम हो जाए. If you got some power, ये हो जाना चाहिए. You know how we are ifs and buts की पेन तो कुछ पता ही नहीं कि मैं आई भी किथे हाँ. तो मैं इस तरह ही सोचा, because सवेरे ही ਇਹਦਾ फोन आया सी, कोई काम पूरा ਕਰਨ ਦਾ कोशिश कर रहे सी, ਤੇ मैं भी सोचा कि ਇਹਦਾ ਕੰਮ हो जाए. से within night time only ਉਹਦਾ ਕੰਮ भी हो गया, and 12-12:15 तक ਉਹਦਾ ਕੰਮ हो गया. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਤੀ ਗੁਰੂਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਖਿਲ ਰਾਜ ਸੇਠ ਹੈ. And I was totally taken aback. And there, after that, of course, we had gone to Dubai. My husband and I, we spent a couple, and it was at the back of my mind that I need to go and thank him. So after about 2 months or so, I wanted to go back to him. I called up my friend again, and she said, somebody's coming from Chennai, तो तेनू आपे जाना पड़ेगा. Of course, I picked up my Maruti and drove down, and the same. Then it was fall, and then this time when I went, I was standing in line, and I wanted to touch his feet and thank him. His feet were under his robe, and Sangaji, he took out his feet, and with such beautiful feet he had, beautiful feet, and I just touched his feet with the tip of my fingers. I touched them with the tip of my fingers, fearing that his feet might get dirty, if I touched them any the more. Blessed were we that we were able to touch his feet like that. From next day onwards, that night when this happened, I didn't realize, but as to why the fragrance, or it didn't dawn on me. But I came back, and after having freshened up for the night, I washed my hands with soap and all. And you know how we Fauji's are synthol, and synthol is a soap that we are using, or Lyril. And suddenly, after I washed my hands and when I was going to sleep, the fragrance from my hands was full of roses. I didn't understand why this had happened. And next day onwards,
मेरे घर च इन्नी गुलाब दी खुशबू, इन्नी प्यारी महक आ रखी पूरी, मैनू समझ ही नहीं आया कि ए क्यों हो रहा है। ते माय मदर हैड कम, शी सेड मैं कॉफी पीन आ रही हां, मैं क्या आ जाओ। सो जदों आए एंड शी सेड ए की इन्ना बड़ा तू ओ रूम बड़ा फ्रेशनर पा के रखिया है पूरे घर च। मैं कहा मम्मी मैं तो कुछ भी नहीं पाया। शी सेड एवी झूठ बोलदी है, इन्ने सच स्ट्रॉन्ग स्मोक फ्रेग्रेंस है, रोजेस दी आ रही है, ए कोई इस तरह थोड़ी आ रही है। आई केप्ट क्वाइट, की दसा मैं। एंड everyone coming into my house would say inni roses di khushboo, and I would just carry it, you know, not understand ki khud ko bhi haath dho। I went washed my hands again, naate tote liril naal te synthol naal, aur fir gulab di khushboo, inni beautiful khushboo, it is something no perfume on earth can capture that fragrance। And after about 5 days I ring up my friend, and because of मम्मी दूजी बार आ गई कॉफी पीने वास्ते, तो फिर आकर के कहंदी बड़ी बड़ी खुशबू तू डाल रखी है। शी वाज आल्सो अ फौजीज वाइफ, एंड मैं क्या नहीं जी मैं तो कुछ भी नहीं किया। एंड देन शी वाज लिटिल इरिटेटेड, and I also then got little irritated, so rang up my friend and I said मेरे तो घर में इतनी खुशबू आ रही है ये since I have gone to your Guruji। Then she told me, she said, this is my Guru's way of blessing you। So Sangaji, this was so divine, it was so beautiful that I don't have no words। And ਹੁਣ भी जब Guruji ने चोला छाड़ देता है, if one is in Scotland, or if one is in New York, or one is in any part of the world, and one is बहुत जोर की हम गुरुजी को बोलते हैं कि अपनी presence, please let me feel your presence, let me feel that you are here, right here with me। इतनी strong खुशबू आंदी है गुरुजी दी, ते it is the same खुशबू which जब चोले सी then we used to get। It's beautiful and it is his way of ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, समाधि माथा टेके बाहर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, that fragrance is very different। It is something which like I said, no perfume can capture। So संगत जी in his बड़े मंदिर में गुरुजी के पास आकर के इतनी एक अलग, and it is not just me, all of us, we have our everything in our life has changed so beautifully कि इन्ना changes आ गए ने, इन्ना सब कुछ। and मतलब and we don't need to ask anyone to pray for us। अच्छा पहले ना एक छोटी जी गल दसनी है, ते I used to पहले मेरे घर एक पंडित आंदा सी, रेगुलरली आंदा सी, ते when Guruji took me into his charan, he then told me one day, and Guruji ने दे नाल जब तुसी like I said ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ you don't need any intermediary, and to each one एक छोटा सा मैं अभी there is so much actually to tell, because every पल, हर एक पल गुरुजी का ही सत्संग है, गुरुजी का ही ब्लेसिंग है, हर सांस में, every breath। So it was like very recently, and we each one of us has a different journey with him। We are never to think, and like no size fits all ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ that ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਹਨੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਪੇੜ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡਾ ਛੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ my children and self, we kind of and the staff ਅਸੀਂ ਦੁਪੱਟੇ ਲਪੇਟ ਲੁਪਟ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਹਨੀ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਤੇ ਜੰਗਲੀ we took out the honey, we got lovely fresh honey, and honey ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ
हनी पा लेती हनी जो पाई संगत जी कोई हफ्ते 3 आई थिंक अबाउट 4 या 5 days में पाई होनी है एंड फिर अखा धो लेती बट आफ्टर अबाउट a week or so my eyes they started troubling me and I got sty in my eye and then I had to put medicine in my eyes for about 2 weeks and this is just finished only now recently you know so no size fits all हर एक दे साढ़े एक दा अलग अलग चाहे मतलब अच्छी तो मतलब we are not in lakhs we are in crores now जो गुरुजी दे followers हैगे ਤੇ डिवोटीज हैगे ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ एंड गुरुजी ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ है मांगना कुछ नहीं है you know कभी भी नहीं कुछ भी नहीं मांगना so I'll just you know when I had just lost my husband my mother my father and my father-in-law सारे चले गए थे मैं you know I was I used to I would pray a lot obviously कौन नहीं करेगा and because we are all looking for you know a support system and then Guruji gave me darshan जो गुरुजी का बड़े मंदिर में जो राइट साइड में गुरुजी ने ब्लू चोला पाया है उस स्वरूप विच गुरुजी came and gave me darshan and he said Ritu aunty what do you want ए गुरुजी दे exact word सी he is asking me this in my dream संगत जी गुरुजी कोलो कदे भी कुछ मंगीदा नहीं say I couldn't and imagine I was at that stage in my life when I had nothing and I had lost everything I had nothing and my son was also not settled कुछ भी नहीं थी and he came and gave me darshan and asked me what do you want Ritu aunty no his exact words were Ritu aunty what not he didn't even say Ritu aunty he said what do you want exactly like this he said what do you want I just looked at him and I told him I mean I didn't telepathically I spoke to him telepathically I spoke to him I couldn't utter I was spellbound मतलब रब आके दर्शन दे ते थोड़ी कुछ मतलब आदमी कुछ बोल ही नहीं सकता समझ नहीं आती कि हो की रहा है तो मैं तो उन्होंने तरफ इंज वेख्या कि मतलब कि मैनू तो ये भी नहीं पता कि व्हाट आई शुड आस्क फॉर मैं बोलूं कि मुझे पैसे चाहिए नहीं हाँ मुझे चाहिए थे पैसे भी चाहिए थे मुझे यू नो आई नीडेड अ प्रॉपर प्लेस टू स्टे आई नीडेड सो मच तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई उन्होंने and I just looked at him because and I just told him telepathically that I told him I said Guruji I don't know what is good for me you know what is best for me and Sangaji this had happened about 10 years back more than 10 years back and when I looked at him and I said this he just looked at me and then he went away this was all in the dream and Sangaji from then but yes मैं उनको मानती थी मांगा नहीं माना मैंने तो उन्होंने मतलब everything he has left no void in my life उन्होंने कुछ भी नहीं मेरे को तुसी अज अगर पूछोगी की चाहिए तेनू तो मतलब रब मिल गया एंड जद रब नाल होंदा है then सारी जटो जहा की खुशियां नाल हो जांदियां ने साथ चलदियां ने रब नाल चलदा है जद and that was around that same time and you know we are very blessed we are truly blessed कि उन्हां दी नजर साडे ते पड़ी है and it's such a big grace Sangat ji so you know then once he gave me again around that time my husband had been posted in Leh Ladakh and he gave me darshan and there's a huge mountain in the dream he showed if Sangat ji those of you who've been in Leh Ladakh we were there posted for about 2.5 years my husband was commanding 666 Aero Squadron and I was working in Kendra Vidyalaya. My son was in class 10
So the mountains there are very bare, and in the dream, Guruji showed that the face of the mountain, the head of the mountain, face of the mountain was that of Guruji. अनंत उसमें उन्होंने अपना अनंत रूप का दर्शन दिया था मुझे. So अनंत रूप में ही शोड चेहरा मेरे रब का था. उनके हाथ वर very long, very very long, and the body, rest of his body was never ending. आसमान से धरती में समाये हुए थे, मतलब जहां देखती तो वही थे. And his arms were like this, and he had nestled me, and he is the mountain behind me. He is the he is you know, he is my Lord God Almighty. He is everything for me. मेरे लिए जो कुछ है सब गुरुजी गुरुजी गुरुजी. And in that dream he showed there is a conversation that is happening, and he has nestled me like this in his arms. He's nestled me like this, and he's telling me, he says, Ritu auntie, this is the water you have to cross. I suppose when he showed me that, and the water that he meant was that these are the difficulties, these are the tasks, ये मेरे को अपने कर्म काटने हैं. This is what he meant. I understood as because this was quite a few years back, and this is what मैं जिस तरह साडी जर्नी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਚਲਦੀ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, सोचो that you know anything that he showed you had to, I mean, because हमारे को तो समझ ही नहीं ना आती कि क्या दिखाया उन्होंने. So he's telling me, Ritu auntie, this is the water you have to cross, and I'm looking up at him. उनका अनंत रूप है, उन्होंने अनंत रूप ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨੈਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, एंड मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਰਫ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜ ਫੇਸ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸਮਾਲ, ਆਈ ਵਿਲ ਡਰਾਊਨ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, but I am with you throughout your life. This is a conversation, Sangat ji, that is happening between my Guru Malik and me. And मतलब ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ मतलब सोचने वास्ते कुछ राह ही नहीं. एंड ही इज टेलिंग मी, रितु आंटी, आई एम विद यू थ्रू आउट योर लाइफ. ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੈਗੇ. ਇੰਨੀ what a big thing he said to me, that he is with me throughout my life. And I'm looking up at him and telling him, Guruji, I'm so small, I'll drown. Oh, he's looking down at me like this because उनका अनंत रूप था. There was his from आसमान के तक तो उनका चेहरा था, वहां से एंड वहां इंज नेसल करके, एंड ही शोइंग मी, रितु आंटी, दिस इज द वाटर यू हैव टू क्रॉस. दैट वाज अ वेरी वीक पार्ट ऑफ माय लाइफ, वेरी टफ पार्ट ऑफ माय लाइफ. एंड सोचो रब ने आके उस वेले आके मैनू ही इज गिविंग मी अनंत रूप ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, this is the water you have to cross. And I'm telling him, looking up at him, and ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, and I'm telling him that Guruji, but I'm so small, I'll drown. He's looking down at me, Sangat ji, and he's saying, Ritu auntie, no, he didn't say Ritu auntie, he said, but I'm with you throughout your life. ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ there is, and ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ ਸਾਥ ਹੈ ਨਾ. शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्र 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 दात्या. So life with Guruji is so beautiful, and I never asked him then, and now also I know there is no need to ask, because if he is walking with me. Why should I say if? He is walking with me. ते जिथे जानी है, and every pal, it is so amazing. अच्छा, I'll share a very small thing. Once, you know, मतलब the way he has in my journey of life, the way he has ensured, taken care in every whatever way, and ਦਰਬਾਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ. ਤੇ in 2000 and I think it was 11, I started having a lot of pain behind my knees, and
I'm basically an athlete, so I couldn't walk on the treadmill also. I was wondering ki ho gaya mainu. And when I went to Bade Mandir, every Thursday I used to be going there, Monday, Thursdays, every day only I would be going. And ਉੱਥੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ I just looked at him, and ਸਿਜਦਾ करते वक्त भी ਮੈਨੂੰ ना बड़ी, and I would get a lot of pain behind my knees. I couldn't bow nicely, and I just looked at him, and I was wondering, I said, Guruji, ये क्यों हो गया वा, मैं सिजदा भी नहीं कर पा रही हूँ. That night Sangat ji, he gave me dream. उन्होंने मैनू विजिट किया एंड उन्होंने दिखाया, एक तो मैं सी ਜਿਹੜੀ सो रही सी, एक फिर उन्होंने दिखाया कि गुरुजी वाज यू नो इंज पहाड़ी जी हैगी, पहाड़ी तो ते पिछों गुरुजी कम्स आउट एंड देन ही शोज you know one Ritu lying down, one Ritu standing and one Ritu sleeping, and then he's telling me and he's showing me, he didn't speak anything, he gave me a very big smile. His smile is so beautiful, and he's showing me the infection that was there behind my knees, and whatever was there in the body, it was full of infection. And Sangaji, this was on the 8th, I think, of November, if I remember correctly. And I wasn't able to, from that day itself, एक हर दिन मैनू या तो मंदिर तो मंदिर बुला लेंदे सी सेवा वास्ते या लंगर वास्ते. एवरी डे मैनू कदे कोई ना कोई बुला लेंदा सी सत्संग वास्ते, लंगर वास्ते, सेवा मिल जानी हर रोज. एंड पूरा नवंबर